हिंदूज में कास्टिज्म का क्या, अभी एक थोड़ा सा आप बैकग्राउंड दे दीजिए कि ये जो डिस्कनेक्ट है और जो ये जो कन्फ्यूजन फैलाया गया है कि कैसे कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज़ होती थी या अभी भी होती हैं, अभी का तो चलो रहने देते हैं, बट पहले क्या होती थी, कहाँ पे डिस्कनेक्ट आया, क्यों आया, एंड yeah, let's start from there, and then there are some other sub So questions that I would before want to. caste based atrocities, I think it is important to understand caste itself. Yeah. And caste, for the longest time, I was caste blind, like all Me of us. either, yeah, no, I mean, everyone actually, it's I mean, it should be obvious to people that a community which consisted only of Brahmins living in the midst of Muslims, हम तो कास्ट के बारे में सोचेंगे कब? हमारे को कौन सा टाइम मिलेगा और हमें सोच के मिलेगा भी क्या? So we were born and raised caste blind, but it is only after, you know, these political events that I started taking interest in caste. You know, I used to study in Tamil Nadu. Believe it or not, there's caste is a big thing there. There is a big thing, but I just breezed through life there without noticing anything. मुझे पता नहीं था यहाँ क्या चल रहा है. मैं तो किसी को भी कुछ भी बोल देता था, वो ऑफेंड भी हो जाता, तो मुझे कुछ पता ही नहीं होता था कि क्या हो रहा है. कश्मीरियों वाला नकाब पहन लिया था आपने. मुझे कुछ नहीं पता भाई, मैं तो हमको कुछ पता ही नहीं है, और जेन्युइनली भी नहीं पता होता. हमें कास्ट का कुछ नहीं पता था. But then when this 2015-16 में वो कन्हैया कुमार वाला वो JNU में शोर मचा, तो then I started taking interest in it कि है क्या चक्कर. और हमको क्यों बिना मतलब गालियां पड़ रही है, हमको तो वैसे ही गालियां पड़ रही है, हमको मार भी पड़ी है, गालियां भी पड़ रही है. तुम ब्राह्मण हो भाई, तुमने सताया. मैं कह रहा हूँ यार, हम तो हमेशा तुम तो बड़े कुछ तो सारस्वत, गॉड सारस्वत ब्राह्मण, तुम्हारा तो लिनिएज ही ऐसा है कि सारा दोष तुम पे मर दिया जाए. So I started reading about Ambedkar, about, you know, these movements और फूले और क्या हुआ, कैसे हुआ. तो luckily I mean, because I came at it from a totally unprejudiced, unbiased mind, I had no stakes in the debate. Right. So I discovered quite a good, you know, quite great insights into the caste system by way of reading the right people. आप आनंद कुमारस्वामी पढ़ लो, इंग्लिश में अगर देखो, निकोलस डर्क्स है, या if you read Ambedkar itself, you will discover a lot of things, because Ambedkar comes at it with such force harshness. and हाँ, such harshness that you say कि यार ये बोल क्या रहा है, मतलब चल क्या रहा है. इतना मतलब ऐसे कैसे कोई बोल सकता है, राइट? तो वो investigate करते करते, so I stumbled upon a lot of these things, and I formed some sort of I had a fair bit of understanding of the issue at hand, which is caste. So caste is basically जो birth based occupation का ये है कि whatever you are doing what your father was doing, and that skill, knowledge, privileges, liabilities, all that is passed to you in hereditary wise. So when the industrial revolution happened, that system was disrupted across the world. The only thing in India was that in the Jati system, you could not, I mean, it was forbidden, or at least it was, you were discouraged from taking another profession, because that would lead to conflicts between groups. Right. So it was a conflict avoidance system, economically speaking, socio-economically speaking. उसका जो आध्यात्मिक एंगल है, उसका जो बर्थ से रिलेटेड है कि आप कौन से कुल में हो, आपके देवता कौन है, आपकी प्रैक्टिसेस कौन सी, आप कौन से रिचुअल्स फॉलो करते हो, रिचुअल प्योरिटी का क्या मतलब है, दैट्स अ होल डिफरेंट वर्ल्ड आउट देयर. इसमें एक पॉइंट और है विच आई वांटेड टू क्लैरिफाई, कि कहीं कहीं पे भी बोला जाता है कि आप किसी कास्ट में पैदा हो जाते हो, बट देन देयर आर प्रावधान्स और प्रोविजंस इन विच बाय योर कर्मा और लाइक व्हाट यू डू, यू can kind of change your caste, or you cannot change your caste. Like you that, cannot change your caste. I mean, it's like saying that you change your father. How do you change your father? वो है जैसा भी है, वो तुम्हारा है उसके साथ. So similarly caste है, you are born into a certain कुल change नहीं हो सकता. उस कुल का कोई, वो किसी जाति का है, और वो जाति का कोई वर्ण है. अब कई सारे जातियां थी जो पहले
उनको ये नहीं पता उनका वर्ण कौन सा है, क्योंकि वर्ण इज अ मोर थियोरेटिकल, अ मोर थियोलॉजिकल रिलीजियस कॉन्सेप्ट. जाति इज मोर लिव्ड रियलिटी. जाति इज वेयर यू आर बॉर्न, दैट यू कैन सी कि मेरा क्लैन ये है, मेरी जाति ये है और हम लोग ये काम करते हैं. अब उस जाति को आप क्लासिफाई कैसे करोगे कि ये क्षत्रिय है या ये वैश्य है या ये ब्राह्मण है, दैट इज वेयर द थियोरेटिकल पार्ट कम्स. तो हेल्प मी अंडरस्टैंड कि within jati there can be varnas or No, varna no. is a Varna is a overarching- more overarching. Overarching. हाँ, Varna is a theoretical category. okay, like the four varnas obviously. Or you could even say it's an ontological category. It is the reality based on the Vedic System. system of thinking. तो उसमें 4 वर्ण हो गए और जातियां तो कितनी भी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं, और जातियां प्रोलिफरेट करती हैं ओवर टाइम. देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरमिक्सिंग विद इन वेरियस जातीज. और अगर वो सेम वर्ण की हैं तो उसी सेम वर्ण में नई नई जातियां बनती रहती हैं. लोग, पॉपुलेशन बढ़ती है, जातियां भी बढ़ती हैं. सो जाति का जो सिस्टम है वो ऑक्यूपेशनल ट्रांसफर ऑफ, इंटरजनरेशनल ट्रांसफर ऑफ स्किल्स एंड ऑक्यूपेशन एंड नॉलेज एट्सेट्रा एट्सेट्रा. अब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद वो डिसरप्ट हुआ एंड a new system came into being, economic system came into being, which was actually forced on us in some way, because industrial revolution तो बाहर से, वो तो इंग्लैंड में हुआ, यूरोप में उसका जन्म हुआ. How did it come to India? It came in the form of colonialism. Yeah. So when colonialism by definition is an exploitative, oppressive activity, right? They came and they conquered us. They enslaved us. They took our resources. They took our knowledge. They used it and then sold it back to us. Yeah. It is happening still, but Repackaged in a more subtle way. But तब तो blatant था. And the modern law that we subscribe to is also an outcome of the same process. That it was law came into being. Modern law came into being to justify privatization, widespread privatization of the commons. And because of that, it is always in favor of the corporations. Right. So today, if you want to do something about the environment, you can't. Because the law does not have Things those... have been set up in such a way, right? yeah. So similarly, this new system of this meritocratic system where anyone is free to do anything is also an outcome, a spin-off of that process of industrialization followed by colonization. And then a new society emerged, a new economic system emerged, and there was tremendous chaos in society. People who were following a certain way of living for thousands of years had to change to do well in life and to survive, right? And later it got repackaged as opportunity for freedom, ये वो जो भी है. But this conflict is at that level where the right for me to practice whatever I want, to do whatever I want, right? My right to follow any profession I want is how it is framed today. But what about my right to practice what my forefathers were practicing? Yeah. You see, but that is termed as some sort of a imposition on you. कि ये तो उसको करना पड़ता था. No, it is a privilege. You see, you look at it differently. आज आपको सिखाया गया ये बोलना कि वो परेशानी, वो अरे उसको तो कोई फ्रीडम नहीं थी. वो फ्रीडम नहीं. आप किसी भी घराने, म्यूजिक में देख लो अभी भी, दैट जो लोग घरानों से आते हैं, जो 2 साल की उम्र से ट्रेन होता हुआ आता है, वो जाकिर हुसैन बनता है. जो सर्टिफिकेट कोर्स करके आता है वो आपको लाखों की संख्या में मिल जाएगा. एग्जैक्टली. सो दिस इज अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट प्रोफेशंस, लुकिंग एट व्हाट यू आर सपोज्ड टू, लुकिंग एट स्वधर्म. अब ऐसे लोग ये भी बोलते हैं कि भगवद गीता में तो लिखा है कि चतुर्वर्ण्य, वो उसका मतलब ये है कि वो गुणों से होता है. तो बट दैट्स अ वेरी नाइव व्यू ऑफ थिंग्स, बिकॉज इट इज एम्पली क्लियर इन द टेक्स्ट कि अगर अर्जुन जब उसको वो परेशानी हुई कि वो कह रहा है कि मुझे लड़ना नहीं है, सो व्हाट डज भगवान कृष्ण टेल हिम कि तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हें लड़ना है. तो वो ये कह सकता था कि नहीं, आई फील लाइक अ ब्राह्मण, है ना.
So then the whole argument falls apart. Trans identity. So there is a lot of confusion about caste and these atrocities. There is no denial that there were problems, that there were some communities who were at the receiving end of these the social upheaval, chaos. And I have written about it I've co-authored an article on it, on profiling the Chamars specifically, कि चमारों के साथ क्या हुआ. और उसमें we've shown how the socio-economic realities of that era changed. Society पे कैसे pressures थे, famines का क्या असर था, और slaughter houses पहली बार सेटअप हुए, गाय मरनी पहली बार शुरू हुई. गाय को तो नहीं मारते थे कभी भी, तो जो चमार का अधिकार था गाय के शव पे, ताकि उसको वो कन्वर्ट कर सके इनटू लेदर गुड्स, वो इंडस्ट्री के पास चला गया. तो लोग वो इंडस्ट्री को बेचने लगे, उसको जो फ्री रॉ मटेरियल मिलता था वो नहीं मिलता था. सो दिस वाज अ टोटल चेंज इन हाउ society was organized and how different communities interacted with each other. और जब उसमें बीच में पैसा आ गया, इतना पैसा बहने लगा, और capitalism in its full force came into being, तो जो interdependence थी between communities, which were non-monetary, a lot of barter, a lot of honor in the exchange, वो सब currencies सिर्फ अब पैसे के उसमें तोलने लगी, तो वहाँ पे exploitation शुरू हुआ. और वो एक्सप्लॉयटेशन आज भी चल रहा है. अभी भी जो है, जो आप लेदर प्रोसेसिंग यूनिट्स में वर्कर्स मेल्ट होके गायब हो जाते हैं और कोई न्यूज़ भी नहीं बनती. पोल्यूशन होता है, सॉइल डिग्रेड हो जाती है, वहाँ पे कभी कुछ उग नहीं सकता उसके बाद 1000 साल तक. तो इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देता. एक चीज़ दिखाई देती है कि ब्राह्मणों ने परेशान किया. ब्राह्मण तो आए ही नहीं पिक्चर में इसमें कहीं. Right. So there is an interesting, there's a very profound work of scholarship on this by Sufia Pathan and Duncan Jalki, who are of the Bal Gangadhar school of, of Indic studies. So unhone they've gone through tomes of data, and they have said कि अच्छा, जो SC/ST Act में जो booking होती है, जो केसेस होते हैं, NCRB डेटा उन्होंने खोज के देखा और उन्होंने एनालाइज किया, कंपाइल किया, तो उसमें उन्होंने बोला कि यार इसमें तो ब्राह्मण बहुत कम है, इसमें तो ज़्यादा जो झगड़े हो रहे हैं वो OBCs, SCs, STs इनके बीच में ही हो रहे हैं. OBCs वर्सेस ST, OBC वर्सेस SC, SC वर्सेस SC, है ना, ये सब ज़्यादा है, तो क्राइम तो वहाँ है. तो ये कैसे बोल रहे हो कि इसका प्रीमाइस क्या है SC/ST एक्ट का, ये हाउ इज इट इवन. So Brahmins are not even in the picture. So the response that they get from academics is that it may not be Brahmins, but it is Brahmanism. This is ridiculous. मतलब क्या बकवास चल रहा है. And this is the foundation of our policy on caste. So right. Yeah, I think that sums it up. About it. I think you were writing a book also about it, right? Yeah, but that there's so many things. We were co-authoring it, so my co-authors are also busy. We're just two of us. So my co-author is busy and I got pulled into something else. So वो कभी एक साथ बैठ के कर नहीं पाए काम. ठीक है, but let's see, hopefully, yeah, sometimes.